Hello students, today in this video we are going to start a new chapter of ICSE class 9 mathematics, that is logarithm. So आज हम लोग logarithm चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाला है. तो अगेन इट विल बी फ्रॉम द सेम बुक, दैट इज एम एल अग्रवाल बुक, पब्लिश्ड बाय अभिजल पब्लिशिंग कंपनी. ओके, सो इस एक्सरसाइज का हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे. उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लॉगरिथम क्यों यूज़ किया जा रहा है, राइट. सो व्हाई वी नीड लॉगरिथम. तो देखो, सपोज हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज यू हैव अ नंबर दैट इज 100, राइट, एंड let us take another number that is you are having 1000 or 10,000. ओके, सो मान लो कि अगर मुझे इस नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना हो. ओके, फर्स्ट लेट मी चेंज द इंक कलर. अगर मुझे इस नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना है इन द वाई एक्सिस, सो इट विल वेरी मच डिफ़िकल्ट, क्योंकि जितने हम लोग ऊपर जाते जा रहे हैं, मीन्स सपोज यू हैव मोर देन 10,000, मीन्स सपोज यू हैव 1 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंसेस है इट्स क्वाइट लार्ज ना. मतलब मान लो 100 से 1000 के बीच में अराउंड 900 का डिफरेंस है. सॉरी, नॉट 900, हाँ हाँ ठीक है, 900 का डिफरेंस है. ओके, एंड सेम 1000 से 10,000 तक 9,000 का डिफरेंस है. ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी लार्ज. ठीक है, तो इस डिफरेंस को पूरा करना ग्राफ में पॉसिबल नहीं है. तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द पावर. मतलब ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को. सपोज वी नो, हम लोग को पता है कि 2 पावर 3 इज़ 8. ओके, ये तो हम लोग को पता है कि जो 2 पावर अगर 3 होता है, मतलब अगर हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 8, राइट. बट अगर हम लोग सेम चीज़ को रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवर्स मीन्स मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 8 जो है वो 2 के कितने पावर में होगा, 2 के कितने पावर में होगा, सो ये हम लोग क्या जानते हैं, दैट विल बी 3 ना. सो इन द सेम वे अगर हम लोग एक कॉमन बेस को पकड़े, इफ़ वी टेक एनी बेस, हाँ, बेस मीन्स जैसे कि यहाँ पे ये जो 2 था दिस वाज द बेस, राइट, और ये जो 3 था दैट वाज द पावर. तो अगर हम लोग एक कॉमन बेस पकड़ते हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 5 हो, या कुछ भी हो, और हम ये जानना चाहें कि ये जो 100 है ये उस बेस के कितने पावर में आएगा. तो सपोज़ अगर मैं पकड़ लूँ कि बेस 10 है, ठीक है, बेस 10 है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में बेस 10 को ही कंसिडर करेंगे. तो ये जो बेस 10 है इसके कितने पावर होने पे मुझे 100 मिलेगा, दैट इज़ 2, राइट. तो हम लोग कह सकते हैं कि 10 पावर 2 इज़ 100. इन द सेम वे अगर हम लोग 10 पावर 3 पकड़ते हैं दैट इज़ 1000, एंड अगर हम लोग 10 पावर 4 पकड़ते हैं तो वो हम लोग का आएगा 10,000. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस किए कि भले ही इन दोनों नंबर्स में लार्ज डिफरेंस है, बट इनके पावर का डिफरेंस इज़ वेरी स्मॉल. मतलब पहले का जो पावर था वो हम लोग का 2 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद 4 था. तो क्या हो अगर हम लोग इस पावर को प्लॉट करें, राइट. तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है वो बहुत रिड्यूस हो चुका है. इसमें बस 1 का डिफरेंस है, इसमें भी देखो सिर्फ 1 का डिफरेंस है. सो लॉगरिथम हम लोग का वही काम कर सकता है. लॉगरिथम से हम लोग कोई लार्ज नंबर को स्मॉल कर सकते हैं बाय गिविंग इट द पावर ऑफ अ बेस. सो इफ आई से
2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, राइट। तो इसको अगर हम लोग को लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है, ये तो हम लोग का चलो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखना है, सो इट विल बी लॉग बेस 2, ओके, दिस 8 विल कम हेयर, दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हम लोग किए क्या, देखो मैं तो बताया ना कि आपको क्या करना है, रिवर्स क्वेश्चन पूछना है। मतलब आपके पास एक नंबर है 8, आपको ये पूछना है कि ये 8 को अगर हम 2 के पावर में लिखना चाहे देन व्हाट इट विल हैपन। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या पकड़ रहे हैं, लॉग बेस टू 8। मतलब अगर बेस 2 होता है तब लॉग 8 का वैल्यू क्या होगा, सो दैट विल बी 3, ठीक है। इन द सेम वे अगर मेरा एक नंबर है 10,000 और मैं इसे 10 के बेस में चाहता हूँ लिखना, तो अगर लॉग बेस 10 हो रहा है तब 10,000 का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी दैट विल बी 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू होगा हम लोग का 4। सो हम लोग इससे क्या चीज़ समझे कि जब भी आपको कोई भी एक बेस टू द पावर का वैल्यू दिया हो, तो अगर हम लोग को इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है, सो वी कैन राइट लॉग, ये जो बेस है ये इसके बेस बन जाएगा, जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, और जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट कंसेप्ट। सो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 9.1। exercise 9.1, okay। So the first question is convert the following to logarithmic form। हम लोग को इसे क्या करना है, logarithmic form में चेंज करना है। Let me change the ink color। okay, so this is 5 power 2 equals to 25। तो जैसा कि हम मैं बताया कि यहाँ पे जो बेस है वो हम लोग का 5 है, सो हम लोग इसे लिखेंगे लॉग बेस 5, जो इक्वल टू के उधर है वो यहाँ आ जाएगा 25, और जो पावर है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज लॉग बेस 5। अगर हम लोग कंसिडर करें तो 25 का वैल्यू क्या होगा 2, क्योंकि 5 का जो पावर 2 है दैट इज ओनली 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question we have a power 5 equals to 64। so again we can write log base a 64 is equal to 5, easy। next we have 7 power x equals to 100। so हम लोग we will write log base 7 100 equals to x। next log base 9 1 equals to 0, ओके क्योंकि यहाँ पे बेस 9 था, पावर 0 था। नेक्स्ट वी हैव 6 पावर 1 इक्वल्स 6, सो वी कैन राइट लॉग बेस 6 6 इक्वल्स टू 1, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि जस्ट वी आर कन्वर्टिंग इट, इट्स वेरी इजी। देन वी हैव 3 पावर माइनस 2 इक्वल्स 1/9। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लॉग ये 3 जो बेस में ये चलाएगा 1/9 इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट we have 10 power minus 2 equals to 0.01, so we will write log base 10 0.01 equals to -2, okay। next question, we have 81 power 3 by 4 equals 27, so this will be log base 81 27 equals 3 by 4, okay। next again we are moving on to the next question, that is convert the following into exponential form। तो देखो अब तक हम लोग जो देखे वो तो लॉगरिथमिक फॉर्म था, सॉरी वो हम लोग का हाँ लॉगरिथमिक फॉर्म था, बट इस बार जो हम लोग को दिया गया है दैट इज फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म वी हैव टू चेंज इट टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। सो हम लोग के पास है लॉग बेस 2 32 इक्वल्स 5। तो हमेशा याद रखो इक्वल के बाद जो भी वैल्यू है ये क्या है, ये बेसिकली पावर है ना। हम लोग तो कोई भी नंबर का
देख रहे हैं कि वो उस बेस पे किस पावर पे आने वाला है, ठीक है। सो बेस तो 2 है तो वो 2 ही रहेगा। 5 जैसा कि पावर है तो वो पावर में चला जाएगा एंड दैट इज 32। ओके, सो दिस इज आवर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव log बेस 381 इक्वल्स 4। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पावर 4 इक्वल्स 81, राइट। नेक्स्ट वी हैव log base 3 1 by 3 equals -1. So this will be 3 power -1 equals 1 by 3. Next we have log 8 4 equals 2 by 3. So this is 8 power 2 by 3 equals 4. Okay. Next we have log base 8 32 equals 5 by 3. So 8 power 5 by 3 equals 32. Okay. Next we have log base 10 0.001 equals -3. So base 10 to the power -3 equals 0.001. Okay, this -3 will go to the power. Next we have log base 2 0.25 equals -2. So this will be 2 power -2 equals 0.25. Okay. Next we have log base a 1 by a equals -1. So a power -1 equals 1 by a. Now we have to convert to exponential form and find the value. Okay, मतलब हम लोग को इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और इसके वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में कि हम लोग को ये जो 16 है इसे 2 के बेस में, मतलब 2 के बेस में लाना है कि 2 के किस पावर पे मेरा वैल्यू जो है वो हम लोग का 16 आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो वी विल राइट लॉग बेस टू 16। अब हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए, हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि 2 के पावर में हो और उसका आंसर 16 आता हो, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं 2 to the power 4 is equals to 16। हम लोग ऐसा कह सकते हैं। सो वी कैन राइट log बेस 2 पावर 4। ओके, ठीक है। अब हम लोग का देखो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आ रहा है, हमेशा याद रखो जब भी यहाँ पे log बेस में कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते बेस में a है और यहाँ पे x पावर में सपोज n है, तो ये जो पावर है ये हमेशा सामने चला आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी n log बेस है x, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि जब भी इस नंबर के पावर में कुछ भी होता है तो वो पावर सामने चला आता है, ठीक है। सो इन द सेम वे जैसा कि ये 2 पावर 4 था तो ये हो जाएगा 4 log बेस टू 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, और एक सेकेंड कंसेप्ट जो हम लोग को याद रखना है यहाँ पर कि अगर मेरा बेस के साथ ये नंबर मैच करता है तो उसका आंसर होगा 1। सो बेसिकली दिस log बेस टू 2 विल बी 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4, ठीक है। इसे करने का एक और ऑल्टरनेट मेथड है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सो लेट मी चेंज द इंक कलर। सो देखो मेरे पास यहाँ पे दिया log बेस टू 16। आप क्या कीजिए, आप इस पूरे को x पकड़ लीजिए, ठीक है। इस पूरे को x पकड़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ये जो बेस 2 है ये तो 2 आ जाएगा और हम लोग को पता है इक्वल के बाद जो भी होता है वो पावर में आ जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 16। अब इस 16 को आप 2 के पावर में लिखिए, 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 4 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव log बेस 5 125, इसे हम लोग x पकड़ ले रहे हैं। सो 5 पावर x इक्वल्स 125 और 5 पावर x इक्वल्स 5 पावर क्यूब।
सो x इक्वल्स टू 3। ठीक है, हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 5 5 पावर 3 विच इज़ 3 log बेस 5 5 विच इज़ 3 इंटू 1 विच इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव log बेस 4 8, वी विल टेक इट एज x। सो ये 4 पावर x इक्वल्स 8। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल राइट 2 स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 पावर क्यूब which is 2 power 2x equals 2 power 3. So 2x equals 3 and x equals to 3 by 2. ओके, तो आप लोग देखें कि जैसे कि ये 8 जो है वो 4 के पावर में नहीं आ पा रहा था, तो मैंने क्या किया, उसे भी ब्रेक किया और 4 को भी ब्रेक किया ताकि वो दोनों 2 के पावर में आ जाए। ठीक है, जिससे हम लोग को ये सॉल्व करने में ईजी हो। नेक्स्ट वी हैव log बेस 9 27, वी विल टेक इट एज x। So 9 power x equals 27, or 3 power 2 x equals 3 power 3, 3 power 2x equals to 3 power 3, 2x equals to 3, x equals to 3 by 2. Okay. Next we have log base 10 0.01, we will take it as x. So 10 power x equals to 0.01, or 10 power x is equals to 1 by 100. 10 power x equals to 100 power minus 1. 10 power x is equal to 10 power square minus 1, or 10 power x equals to 10 power minus 2, x equals to minus 2. Okay. Next we have log base 7 1 by 7, we will take it as x. So 7 power x equals 1 by 7, or 7 power x equals to 7 power minus 1, x equals to minus 1. Okay. Next we have log 0.5 256, we will take it as x. Then we have 0.5 power x equals 256. Okay, then we have 5 by 10 power x equals 256. Right, we can write it as 1 by 2 power x equals 256. We can write 2 power minus 1 x equals 256. अब इस 256 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। This is 128, 264, 232, 216, 28, 24, 22. So basically it is how many? 3, 6, 8. So we can write 2 power minus x equals to 2 power 8, minus x equals 8, x equals to minus 8. Okay. Next question we have log base 2 0.25, we will take it as x. 2 power x equals 0.25. Okay, then we have 2 power x equals to, we can write it as 1 by 4, and 2 power x equals 4 power minus 1, 2 power x equals 2 power squared and minus 1. We have 2 power x equals 2 power minus 2, and therefore ultimately x equals minus 2. Okay. Next question we have log base 3x equals 2. We have to find, so this is basically a new question, we have to solve it and we have to find the value of x, right? So that's very easy, we will take the base as 3. हम लोग यहाँ पे 3 का बेस ले लेते हैं, इक्वल्स के बाद जो भी है वो पावर में आ जाएगा और x जो है वो यहाँ चला आएगा. So 9 equals x, or we can write x equals 9. Okay. Next we have log base x 25 equals 2, or we can write x power 2 equals 25, or we can write x equals square roots of 25, which is 5. Okay. Then we have log base 10 x equals minus 2, 10 power minus 2 equals x.
and x equals to 1 by 10 square, which is 1 by 100. Okay, or you can write it as 0.01. We have log base 4x equals 1 by 2, then 4 power 1 by 2 equals x. Okay, 4 power 1 by 2 equals x, and we can also write it as x equals, sorry, so 2 power 2 1 by 2 and x equals to 2. So x equals to 2. Okay, next question. We have log x 11 equals 1, or we can say x power 1 equals 11, so x equals to 11. Next we have log base x 1 by 4 equals minus 1, so we can write x power minus 1 equals 1 by 4, or 1 by x equals 1 by 4, so x equals to 4. Next we have log base 81 x equals 3 by 2, and 81 power 3 by 2 equals x. We can write 9 square power 3 by 2 equals x, or x equals to 9 power 3. Okay, so x equals to 729. Next we have log base 9 x equals 2.5, or we can write 9 power 2.5 equals x. We know that it is 2.5 means 25 by 10 equals x. 25 by 10 means 5 by 2 equals x. So 3 square 5 by 2 equals x. 2 goes off, and we have x equals 3 power 5. Okay, 3 power 5 means 2 4 3. Okay, just let me change the hue color. We have log base 4x equals minus 1.5, so 4 power minus 1.5 equals x, or 4 power minus 15 by 10 equals x, 4 power minus 3 by 2 equals x, 2 square minus 3 by 2 equals x, 2 goes off, so x equals to 2 power minus 3, which is 1 by 8, or you can write 1 by 2 power 3, okay, which is 1 by 8. Next question. This is log, in the base we have root 5 x equals 2, so this is root 5 power 2 equals x. Root will go off and x equals 5. Next we have log base x 0.001 equals minus 3, so x power minus 3 equals 0.001, or we can write it is 1 by x power 3 equals 1 by 1000, or x power 3 equals 1000, so x equals cube root of 1000, which is nothing but 10. Then we have log base root 3 x plus 1 equals 2, so this is root 3 power 2 equals x plus 1, which is 3 equals x plus 1, and x equals to 2. This will be whole, so log base 4 whole 2x plus 3 equals 3 by 2, 4 power 3 by 2 equals 2x plus 3. So basically we are doing exponential form in every case. Okay,
So 2 square 3 by 2 is equals to 2x plus 3. This is 8 equals 2x plus 3. 8 minus 3 equals 2x, and x equals 5 by 2. Okay, then we have log cube root of 2 x equals 3. So that's very interesting question. So cube root of 2 again power 3. So basically they want to remove the cube root. So this is nothing but x equals 2. Right. Again we have this uh, whole x square minus 1. Just let me check the question. Yes. So log base 2 square minus 1 equals 3, and we have 2 power 3 equals x square minus 1. So 8 plus 1 equals x square, and x equals root over 9, which is plus minus 3. Okay, now next question, we have log x equals minus 1. So see, whenever there is no base given, what you can do is basically you will take the base as 10. Okay, so we can write it as log base 10x equals minus 1. So remember, when no base is given, just take it as 10. Okay, so this is 10 power minus 1 equals x, and x equals 1 by 10, which is 0.1. Then again this is whole bracket. So we have log 2x minus 3 equals 1. We will take the base as 10. So 10 power 1 equals 2x minus 3, or 10 plus 3 equals 2x. So x equals 13 by 2. Okay. Then we have log x equals minus 2. So 10 power minus 2 equals x, or x equals 1 by 100. Right. Basically 1 by 10 square, or 1 by 100. Then log x equals 0. So this is log base 10x equals 0, or 10 power 0 equals x. So we know that anything to the power 0 is 1. So x equals 1. Okay. Then again we have log base 10x equals 1 by 3. So 10 power 1 by 3 equals x. Or we can write x equals cube root of 10. Because remember, when it is a power half, we can write square root of a. If it is a power 1 by 3, we can write cube root of a. Okay. Now, next we have a very interesting question, that is log base 10 a equals b. Okay, we have to express this one. So first let change this one, log base 10 a equals b. I'm writing this in exponential form, so this is 10 power b equals a. Right, now you have 10 power 2b minus 3. You can write it as 10 power 2b by 10 power 3. I'm using the principles of exponents. So we can write 10 power b whole square by 1000. 10 power b is nothing but a, so a square by 1000. Okay, so this is our answer. Next I'm having this log base 10x equals a. First I'm changing it into exponential form, 10 power a equals x. Then we have log base 10y equals b. So 10 power b equals y. Also I have log base 10z equals c. So 10 power c equals z. Right. Now what they have written? They have given 10 power 2a minus 3. So I will write 10 power 2a by 10 power 3. Okay. And 10 power a whole square by 1000. So this is basically x squared by 1000.
Okay, because we know that 10 power a is x. Now same question but second subpart. We have 10 power 3b minus 1. So we can write 10 power 3b by 10, or we can write 10 power b cube, power means whole 3, and by 10, 10 power b is what? Y. So this is y power 3 by 10. Okay, next question. Again the same question but the third subpart. We have to express p in terms of xyz. So they have given this expression. So log base 10p is equals to a plus b by 2 minus 3c. Okay, now what I can do, I can write 10 power 2a plus b by 2 minus 3c, that is equals p. So this is 10 power 2a multiply 10 power b by 2 by 10 power 3c. Okay, just the principle of exponents, because we know when the power is added it means the base were in multiplied terms. Okay, now I will write this as we know 10 power a is x, so this is x squared times uh, 10 power b is nothing but y, so this is y power half, by 10 power c is nothing but z, so this is z power 3. Now instead of y power half I can write x times then square root of y by z power 3. Okay. Okay. Now moving on to question 7. So we have this, first let me change the ink color. Okay. So 10 power a equals x, this in exponential form, and again this one in exponential form is 10 power b equals y. Okay, so we have to find the value of xy. So xy means 10 power a times 10 power b, which is 10 power a plus b. Okay, now we have first again change this one, this is 10 power m equals a, change this one 10 power n equals b. So we have to write a cube by b square, which is 10 m power 3 by 10 n power 2, which is 10 3m by 10 power 2n. Okay, or I can write 10 power 3m minus 2n. Next again I have this 10 log base 10 x equals 2a, 10 power 2a equals x. Okay, and this 10 power b by 2 equals y, but they have asked to write 10 power a in terms of x, so I can write 10 power a whole square equals x. If I remove this power 2, so this will be square root of x. Okay, square root of x. Now same question but second subpart, we have to write this in terms of y. So this is 10 power 2b plus 1, which means 10 power 2b times 10, which means 10 power b whole 2 into 10. So 10 power, we know that 10 power b by 2 is equals y. Okay, is equals y. Or I can also write, if I square both sides, so this is 10 power b by 2 whole 2 equals y2. So this is 10 power b equals y2. I will use this one. Instead of 10 power b, I will write y2. Okay, into 10. So this is 10 y power 4. This is 4. Okay. Next, third subpart, we have this log base 10p and we have to express in terms of x and y. So first we know that 10 power 2a equals x, or 10 power a equals
root x. Also 10 power b by 2 equals y, or 10 power b equals y. Now from here we know that 10 power 3a minus 2b will be p, or 10 power 3a by 10 power 2b equals p. So instead of 10 power 3a, I can write it as square root of x power 3 by, instead of 10 power b, I will write y power 2 whole 2, that is equals p. Also, instead of square root of x, I can write x power half whole 3 by y power 4, which is p equals x power 3 by 2 by y power 4. Okay. Next question. Log base 2 y equals x. So I can write 2 power x equals y. Also, log base 3z equals x. So I can write 3 power x equals z. Now they have asked 72 power x. So if I factorize 72, it will be 236, 218, 2933. Okay. So this is 2 power 3 times 3 power 2 whole x. Okay. So this is 2 power 3x times 3 power 2x. So instead of 2 power x, I can write y power 3. And instead of 3 power 2x, I can write z power 2. Okay. So this is our answer. Last question. We have, again I am changing this one, 2 power a equals x, 5 power a equals y, and they have given 100 power 2a minus 1. So this is 100 power 2a by 100. Okay. If I factorize 100, so I will get 250, 225, 55. So this is 2 power 2 times 5 power 2 whole 2a. Okay, by 100. So this is 2 power 4a times 5 power 4a by 100. Now this is, instead of 2 power a, I will write x. So this is x power 4 times y power 4 by 100. This is our answer. Okay. So this is how we have completed our exercise. Hope you understood all the question. Okay. So in the next video, we will continue with the second exercise of this chapter. So thank you for watching. We will meet in the next video.